Let us start. Okay, so the first thing let me discuss is the structure of the question paper. तो स्ट्रक्चर में हमारे पास we will have around 5 questions. Question 1, 2, four, 5. First question is very clear. It will be on MS Word. Now you have uh, 3 sort of things that can come for you. That is, one is table creation, then you have poster making, and then you have mail merge. So we have these 3 options which can come for MS Word, right? Very clear on this? Any confusion? This is our main topic and this is what can come. Now, next question is of course MS PowerPoint, और इसमें you have a very simple question. You have to create a presentation of 4 to 5 slides. अब इसमें जो स्लाइड्स में जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा. So you will be given what content you have to post. अगर उसमें पिक्चर्स लगानी होंगी तो you will be also given the pictures. You will be basically given everything. You just have to create a PowerPoint out of it. You don't have to download anything. You don't have to put anything new. You just have to create the presentation. जो कंटेंट गिवन है, जैसा गिवन है उसको अरेंज करके प्रेजेंटेशन बनाना होगा. अब उस प्रेजेंटेशन में आई हैव डिस्कस 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर क्रिटिकल. So we have things which we insert on the slide, like images, page number. So all those sort of things are called insert on the slide, insertions on the slide. तो insertion कैसे करना है वो पता होना चाहिए. दूसरी बात, आपको ट्रांजिशन एनिमेशन पता होना चाहिए कि हम ट्रांजिशन एनिमेशन किस पे लगाते हैं और कैसे लगाते हैं. फिर कस्टम एनिमेशन होना चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट एनिमेशन भी बोलते हैं. So you will be asked to apply some sort of custom animation on some picture or some text, whatever the case may be. So I hope this is very clear that in this presentation you largely have to understand that how to do these things. Insert something on the slide, it could be picture or it could be text, anything that can be put on a slide, and the 2 other things are transition animation and custom animation. अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन, दैट विल बी एमएस एक्सेल. अब यहाँ पे हमारे पास everyone knows that we have got 5 topics basically. So one is payroll, then we have depreciation, then we have loan and lease, then we have regression, and lastly we have frequency distribution question. ये क्वेश्चंस मैंने बार बार करा दिए हैं क्लास में, इनके 2-2, 3-3 वर्जन्स भी कराए हैं. तो इनमें से 2 की चॉइस के साथ में आ सकता है क्वेश्चन जो है. तो पहले वाले में लेट्स सपोज इन क्वेश्चन नंबर 3 you might be given, let's suppose you might be given depreciation versus regression, और दूसरे वाले में you might be given frequency distribution versus loan and lease. तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा और वाली चॉइस होगी, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है?
And the last question is MS Access. MS Access में, so in the class we did a whole case जिसमें हमने टेबल्स भी बनाई, फिर हमने वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करे, और फिर हमने क्वेरीज भी डिजाइन करी, फिल्टरिंग भी लगाई उनमें, तो बहुत सारी चीजें करी थी हम। पर यहाँ पर जब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट विल बिलोंग टू अ सिंगल डेटाबेस, एक ही डेटाबेस का क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें करना क्या है सिंगल डेटाबेस वाले क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू एनफोर्स referential integrity. Just give me a minute, I'll be back. Okay, so I hope everyone can hear me back again. Now, now we have a couple of things to do in MS Access. तो MS Access में एक हमने बात कर ली enforcing referential integrity. Enforcing referential integrity means that we create relationships between the two tables. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में. Those who were there will be fully aware of what we did. Then we have the second thing called validation rules. So we put validation rules. Validation rules apply करने आने चाहिए आपको. And the third thing that we are looking for is creating queries. Creating queries में, once you have all the required columns, then you might be asked to do three kind of things. Filtering, you have to filter the data on the basis of some criteria. You might be asked to do sorting, that you have to sort the data on some basis. And lastly, you have something called column creation. You might be asked to create a new column using all the other columns in your query. तो इन सारी चीजों को लेकर ही हमारा MS Access का सारा डिस्कशन हुआ. So this is largely what we have covered, and this is going to be the structure of your एग्जाम. अब इसमें हमारे पास ध्यान से अगर देखें तो 4 टॉपिक हो गए, राइट. वी हैव 4 टॉपिक्स, MS वर्ड, MS PPT, एक्सेल एंड एक्सेस. और एक्सेल के 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी सबके एक एक क्वेश्चन. लेट अस लुक एट द मार्क्स ब्रेकअप. सो वेरी सिंपली पुट, 15 मार्क्स के आपके 2 एक्सेल के क्वेश्चन होने वाले हैं. दे आर द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ योर 50 मार्क पेपर. ठीक है.
50 नंबर के पेपर में 15-15 मार्क्स के जो हमारे एक्सेल के क्वेश्चन हैं, they become the primary thing. Then we have MS Access question for 10 marks, and we have MS Word and PowerPoint for 5 marks. So that gives us a total of 50. तो इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं आपको. You have to solve all the questions to get a total of 50 marks. हाँ जी. Any doubt? सर टाइम ड्यूरेशन क्या होगा प्रैक्टिकल का? 2 hours. Duration is 2 hours. At max, you might be given 10 or 10 minutes basically for reading the question paper, understanding the question paper before the start of the exam. So 10 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे और फिर 2 घंटे मिलेंगे ये सारा काम खत्म करने के लिए. So when I always try and look at the length of the paper की ड्यूरेशन कितना टाइम लगना चाहिए जिसको कोई अच्छी तैयारी करके अगर आया है तो सारा काम करने में आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. यू कैन फिनिश दिस पेपर इन 1.5 hours. तो आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है टू टू जस्ट मेक श्योर कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, यू फेस एनी इश्यूज, so you can correct, you have time to correct those issues. Yes.